आज बिहार का स्टैंड कहाँ है? देश बिहार से सब कुछ एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो फाइनेंस ब्रेन्स हो, एडवोकेट्स हो, मैथमेटिशियंस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, या चाहे फाइनेंस लेबरर्स ही क्यों ना हो। Whenever there is tension in the border area, the Gorkha regiment, the Bihar regiment is remembered. फिर भी आजादी के इतने साल बाद बिहार वहीं का वहीं रह गया और बाकी के जितने स्टेट्स थे वो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए। Let's see to it what were the policies that were not good for Bihar and what was the state of Bihar when Jharkhand was its part. How the education policy improved in the state Bihar, you will know it further in this video. Each state economy has an overall impact on the national economy. बिहार की इकोनॉमी से देश की इकोनॉमी काफी नीचे हो जाती है और ये इकोनॉमी बिहार अपने टूरिज्म से काफी अच्छी कर सकता है। इट कैन बी एट द फोरफ्रंट फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है, शेरशाह सूरी का मकबरा है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, मॉन्यूमेंट्स हैं और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर वर्क है। सो दीज आर सम प्रोस्पेक्ट्स that can make Bihar a tourism spot. Lack of knowledge, lack of awareness की वजह से यहाँ पे लोग monuments को खराब करते हैं, वहाँ पे अपने नाम लिख कर जाते हैं। So the most priority to be given is on making people aware of the excellent things they have in the state Bihar. So the angle of tourism was being neglected, but now the CM Nitish Kumar is working on a 20-year master plan for the development and promotion of tourism in the state. The government has identified 900 tourist spots to be developed as tourist place. But the ratio of the domestic tourists are more than the foreign tourists. तो फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अभी भी काफी डेवलपमेंट होना चाहिए इन टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी तो इंडिया इकोनॉमी पर काफी असर पड़ेगा। एक समय ऐसा था कि बिहार में आए दिन कोई ना कोई बड़ी सी बड़ी घटनाएं, मैसेकर्स होते रहते थे। बड़े बड़े बाहुबली नेता हुआ करते थे। बिहार हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कास्ट वायलेंस एंड द मेन बैटल वाज बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मैसेकर दैट वाज द लक्ष्मणपुर बैथ मैसेकर। 58 Dalits were killed in this violence, but still the justice is not given. The villagers waited for justice, and after 16 years of that violence, the accused were freed by saying lack of evidence by the Patna High Court. But yet some of the villagers have forwarded their plea to the Supreme Court. 2013 के जजमेंट के बाद कोई भी नेता इस विलेज में नहीं गया और इस गांव के लोग अब ये मुद्दा उठाना भी नहीं चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि यहाँ पर बिजली आए, पानी आए, एजुकेशन आए और उनके गांव का डेवलपमेंट हो। रणवीर सेना was the prominent figure in this violence. The village was brutally attacked by the रणवीर सेना। इसको हम कह सकते हैं कि नरसंहार हुआ था बिहार में और इस तरह के बहुत सारे वायलेंस हुए हैं before 2005. Out of 38 districts in Bihar, 22 districts were in the influence of Naxals, which came down to 4. During the CM Nitish Kumar reign, the law and order were restored. Development and good governance led to various series of significant results. बिहार उन स्टेट्स में से था जिसके पास सब कुछ था। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ के मिनरल्स ओर्स इतने थे कि बिहार जिस स्टेट जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में वो कभी नहीं होता। इफ द पॉलिटिक्स, करप्शन, बैड पॉलिसीज, बैड गवर्नेंस नहीं होते तो। बिहार में इतने मिनरल्स ओर्स होने के बावजूद यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ जितनी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए थी यहाँ नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्री ना खोलकर ये मिनरल्स और ओर्स कहीं और भेजे गए, मींस किसी और स्टेट्स में भेजे गए और वहां कंपनी खोली गई एंड दैट कंपनीज बिल्ड देयर प्रोडक्ट्स एंड सेल इनटू द मार्केट एंड दे गेन द प्रॉफिट। व्हाट डिड बिहार गॉट? बिहार गॉट नथिंग, neither industry nor employment. So that is why the people of Bihar migrate towards other states to find jobs, to find their education. But at present, from the last 10 to 15 years, the industries are being set up. The development of Bihar will be only seen if the people of Bihar are educated. The people of Bihar used to have a mindset like either the government job or farming or agriculture just to fulfill their basic needs. पर अब the students like Shubham Kumar
are more interested to start their startup and are requesting government to make policies to help them to start their startup in Bihar because they are wanting to work in Bihar itself. The focus of education here is on maths, physics and other entrance exam subjects. जिस वजह से due to lack of communication skills, they were unfit for the corporate jobs. As soon as citizens of a nation started taking English as a skill, Bihar was left out. State Bihar gave priority to the language Hindi. Whenever the people of Bihar went outside to other state, they find lack of confidence, lack of skills, lack of consciousness to talk to different people in different states. But now the condition is different because जो अब generation आ रही है that is more digitally equipped and they have more knowledge as compared to the previous generation. In city Patna काफी एजुकेशन सेंटर्स खुल गए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स बट स्टिल द स्टूडेंट प्रेफर गोइंग टू अदर स्टेट्स एंड स्टडी देयर क्योंकि बिहार में एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं थी और अभी भी समवॉट नहीं है. बिहार इज वन ऑफ द स्टेट्स वेयर द फीमेल स्टडी just to qualify minimum criteria of education and there is no focus on job resulting education. CM नीतीश कुमार ने एजुकेशन को पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार started cycle योजना that became the motivation among the students and they started to study either it's the male or the female. At present the state of Bihar has shown the outstanding performance in education with number of schools and colleges being increased. अभी जो education policy आई है उस हिसाब से the census of 2021 shows Bihar might indicate positive impact of the government policies of various government schemes in the education level. बिहार ने और states के मुकाबले अपना expenditure on education बहुत ज्यादा रखा है of 2020-21. Like the capital of Bihar has emerged as the center of education like technology, medical, law, fashion. The problem is not in the state Bihar. The problem is in the people living there. It's not the recognition of the new leader or the new face. It's the thing that we see the work done by the leader and the potential of that leader. As the present scenario, JDU and BJP are on full seats. Now each party is blaming each other for their own rise and now it's on the people that they examine and give their vote to see more development in Bihar. If you like my content, then do subscribe my channel and like my video. Thank you and namaste.